Good morning, student. Here again I am back with the new topic. In the previous classes, we have studied about the types of bones which are present in our skeleton. So, student, today we will study about the functions of the skeleton. That now student, please listen to my questions properly. That what I am saying. Now, student, I am showing you a puppet. नाउ टेल मी दिस इज़ अ पपेट. पपेट का मतलब होता है कठपुतली. ओके, नाउ कैन यू टेल मी दैट व्हाट डू यू नोटिस इन दिस पपेट? Can these puppet stands on its own? Can it sits on its own? What would have happened if there were no bones in our body? इसका मतलब ये है कि अगर इस पपेट को देख करके हम लोग क्या चीज़ मतलब क्या चीज़ नोटिस किए, क्या चीज़ हम लोग जान सकते हैं. सो द आंसर इज द पपेट कैन नॉट स्टैंड और सिट बिकॉज इट हैज़ नो बोन टू सपोर्ट इट. आवर बॉडी वुड बी लाइक जेली विदाउट अ form or shape if there were no bones in our body. It means that ये पपेट जो है ये अपने आप से ना खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है. वाई? क्योंकि इसके अंदर कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं है. नाउ स्टूडेंट कैन यू एंड अगर इसके अंदर कोई भी बोन्स नहीं है तो इसका बॉडी एकदम जेली के जैसा होगा. इट वुड बी सॉफ्ट. नाउ स्टूडेंट कैन यू टेल मी दैट इफ द human being don't have the bone, how would be our body look like? So our body would be like a jelly only, and without bones our body will be unable to do the movements of our body parts. So student, let us study out one by one the functions of the skeleton. Let's start. The skeleton is very important part of our body. It means that skeleton जो है वो हम लोग के बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा important है. Now first function, the skeleton gives shape and support to our body. It means that ये जो skeleton है ये हम लोग के बॉडी को एक shape देता है और it gives the support. Without the skeleton our body would be like a jelly, and if there would be no skeleton in our body or bones, then our body would be like totally jelly. The bones provide a strong framework that help us stand is upright and walk, and because of the bones which are present in the which are in our body, and because of that we are able to stand upright means that we can stand straight and we can walk also. So the first function of the skeleton is that it gives the shape and support to our body. Now we will move on to the next part, that is what is next. It protects the organ inside our body. Now the skeleton, it protects ये हम लोग के बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है. द नाउ सी विच ऑर्गन्स डज इज प्रोटेक्ट इनसाइड आवर बॉडी. द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन. नाउ सी इट इज आवर ब्रेन and the skull are protected with the help of our brain is protected by the skull. Now you can see here that skull जो है वो हम लोग के ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. The backbone protects the spinal cord, and the backbone it protects the spinal cord. Now the rib cage protects the heart and the lung. You know that in the previous classes we have studied about the rib cage. That rib cage is present in our chest region, and the rib cage protect the heart and the lungs. Now the second point was that it protect the organ inside our body. Now we will move up to the third one. The skeleton allows the movement of the body part. It means that if there would be no skeleton, then our body part we cannot be able to move our body part. There would be no any movement in our body part. Joints are structures that join parts of a skeleton and helps in the movement. What is the meaning of joint? Joint का मतलब ये होता है जहाँ पे दो bones meet करती हैं, and because of that we are able to move our body part, and all the joints, all the parts, they are connected with each other with the help of a skeleton, and because of that we are able to do the movement of our hands and leg. Now
the third one was that with the help of the skeleton only the movements of the body part can be done. Now the last one, the bones of our body are filled with the bone marrow, which is very important for the formation of blood. It means that first of all you understood the meaning of bone marrow. What is the bone marrow, children? So bone marrow means एक soft tissue जो मतलब हम लोग के bone के अंदर प्रेजेंट है, डैट इज द बोन मैरो. सो आवर बोन इज प्रेजेंट आवर, सो हम लोग की जो बॉडी में जो बोन है उसके अंदर उस एक सॉफ्ट टिश्यू है जो प्रेजेंट है इनसाइड आवर बोन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. खून को बनाने के लिए उसके फॉर्मेशन के लिए बोन मैरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. होप सो स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक. सो लेट अस. So student, can you give the answer of one question? Listen it. A man broke his rib cage in an accident. Which body part could he have damaged? It means that एक man है उसका एक्सीडेंट हो गया है और रिब केज में उसके प्रॉब्लम आ गई. सो कैन यू टेल मी उसका कौन सा बॉडी पार्ट डैमेज हुआ होगा, कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ होगा? द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग. ही कुड हैव damaged either of these organs. So we have studied in the function of the skeleton कि जो रिब केज है ये हम लोग के हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, और अगर हम लोग के रिब केज में चोट लगी है तो वो हम लोग के हार्ट और लंग्स में अफेक्ट पड़ सकता है. द हार्ट एंड लंग्स में गेट डैमेज. होप सो यू हैव अंडरस्टूड अप टू हियर. नाउ लेट्स स्टडी इन शॉर्ट द फंक्शन ऑफ द skeleton. See here. Give shape and support to the body. First one. Second, allows movement of different body parts, stores calcium and phosphorus. Last one, protect organs inside our topic. Thank you children. Hope so up to here you have understood. Now we will be again back